Students are about to graduate, but they don't know which path to choose, which career to select, or which industry to go on. Which factors should the students consider while selecting a career or selecting a degree? 50% is the cause कि students को नहीं पता कि उन्होंने किस career में जाना है, so that is causing unemployment. First of all, students don't know what they want to do. Third and most important is कि आप गलत लोगों से मशवरा ना लें. What students are doing or what teachers are maybe injecting in them is degree by degree. So they are just doing it because they need a paper. Anyone who is a good speaker is going to become a career counselor. So maybe he's just a good speaker and he's not a good career counselor. The person is doing a good degree, the relevant degree, but you don't know where he is going to be placed in the industry. You won't believe कि मैं graduation के students को sets पढ़ाती हूँ. आपने भी sets 5-6 में पढ़े होंगे. कैरियर काउंसलिंग आज के दौर में हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू है. स्टूडेंट्स आर अबाउट टू ग्रेजुएट बट दे डोंट नो which path to choose, which career to select, or which industry to go on in. So there are a lot of factors that affect their choices. Some paths are easy to choose, some are difficult to choose. So आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे. आज की पॉडकास्ट इसी पे है कि which factors affect their choices of the student, which factors should the students consider while selecting a career or selecting a degree. तो इन सब को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी जेएलएम कैंपस की लेक्चरर, जो कि ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही है बल्कि इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती रही है. इन मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम करती रही है. She does not only has educational but as well as some practical experience as well. So please welcome Miss Aminah from Punjab University JLM campus. Assalamu alaikum ma'am. Walaikum salam. Thank you for your time. Thank you so much for calling me for this. So ma'am, हमारे मुल्क में जब अनएम्प्लॉयमेंट जो है, आपको पता होगा अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, और ख़ास तौर पे जो फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो एक एम्प्लॉयमेंट लेना, एक जॉब लेना उनके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, मुश्किल है. बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो एक एम्प्लॉय हो जाते हैं जल्दी. तो आपको क्या लगता है कैरियर काउंसलिंग इसकी एक वजह है? Well, I think career counseling is की 50% reason है. 50%. I would not say 100% because maybe you had a good career counseling और उसके बाद आपने उस career को choose भी किया लेकिन आपने उसको ठीक तरीके से pursue नहीं किया. That's also going to lead you to unemployment. 50% is the cause कि students को नहीं पता कि उन्होंने किस career में जाना है. So that is causing unemployment. But on the other hand, 50% of the time when students are picking a career but they're not doing it well, that's also causing unemployment. So हम सारा का सारा blame career counseling को नहीं दे सकते, but yes, 50% of the time it is playing a very major role in unemployment. चले, आपने बोला 50% कैरियर काउंसलिंग फिट करता है. Exactly. तो अगर 50% भी वो जाता है तो क्या कोई मिस्टेक्स होती हैं कि वो अपना कैरियर सेलेक्ट करते हैं, जो मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, वो कुछ आइडेंटिफाई कर देगा आप? Exactly. Basically, I think students make a number of mistakes. First of all, students don't know what they want to do. First of all, they have no idea about what they want to do. अगर आप एक क्लास को देखें and there are like 30 students and 50 students and you ask why you are in this specific degree, they have no answer to it. What they're going to do is कि या तो वो ये डिग्री इसलिए कर रहे हैं because their group of friends actually asked them कि हमने CS करना है तो आप भी CS में आ जाए, right? Otherwise they would be like हाँ सब BBA कर रहे हैं, BBA में seats हैं, let's do BBA. Now अब अगर आपका माइंडसेट ये है कि a lot of people are doing this, that's why I'm doing this, तो फिर आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते. दूसरी चीज, they just pick up whatever is available. So like I'm living here, so only these courses are available. I don't like it, but I'm gonna do that. This is also one of the reason जिसकी वजह से students don't know. उसके बाद तीसरी mistake, 2 mistakes. One, they don't know. Second, they are just following whatever the crowd is doing. And third mistake is they are going to take advice from people who actually don't know anything, right? So there are a lot of people who are career counselors, but they actually don't know what they are doing. अब अगर मैं हर एक को कहूँ कि क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक काम किया तो आप भी उसी को फॉलो करें, that's a wrong career advice. Maybe you're not made for it. Maybe someone else is not made for it. So you have to know what you want. You don't need to follow everything blindly. And third and most important is कि आप गलत लोगों से मशवरा ना लें. You have to look for people who actually know a lots of things. Do your background research. Like do the research actually before picking up something. So ये common mistakes हैं which students do after maybe when they are picking up university degree or maybe even when they are starting their intermediate. That's the main thing they do. आपने you have also told the solutions regarding these problems. लेकिन आपको नहीं लगता कि ये solutions को common करने के लिए हम लोग या teachers या lecturers
एक कॉलेज लेवल से या कुछ ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल है। आई वुड से दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच शुड बी डन, कि इफ इट शुड बी इंक्लूडेड लाइक यू नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे हम लोग अक्सर ये मिसाल लेते हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट फॉरेन एजुकेशन सिस्टम और व्हाट्सोएवर, वी आर जस्ट थिंकिंग कि हाँ वो तो बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने देते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो आई थिंक द सेम अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन इन पाकिस्तान एज वेल। और स्टूडेंट्स को ये बताना भी चाहिए कि कैरियर इज इम्पॉर्टेंट, योर डिग्री इज इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग और व्हाट टीचर्स आर मे बी यू नो इंजेक्टिंग इन देम इज डिग्री बाय डिग्री। सो राइट, सो दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज दे नीड अ पेपर। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि अभी पेपर की अहमियत उतनी नहीं रह गई। फॉरेन कंपनीज एंड यू नो इंटरनेशनली दे जस्ट थिंक व्हाट यू नो। तो उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि आप डिग्री बराए डिग्री नहीं कर रहे। तो अगर आपकी कैरियर काउंसलिंग ड्यूरिंग द एजुकेशन नहीं हो रही है, टीचर्स को ही नहीं पता कि कैरियर काउंसलिंग करनी है, तो फिर और कैरियर काउंसलिंग शुड बी अ ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग सो इट शुड नॉट बी लाइक वन पर्सन। सो यू नो आई एम लेक्चरर एंड आई एम डूइंग कैरियर काउंसलिंग, एंड there should be a lot of people as a group who should make policies or maybe who should come up with ideas or maybe solutions कि कैरियर काउंसलिंग कैसे होनी चाहिए। अब होता क्या है पाकिस्तान में भी या ओवरऑल भी, आई वुड से इन द एंटायर वर्ल्ड, कि anyone who is a good speaker is going to become a career counselor. So like maybe he's just a good speaker and he's not a good career counselor. तो अब हमें इस चीज को फिगर आउट करना है कि कैरियर काउंसलर is a person who knows what is going on in the market, who knows where the market is going, you know, later on. तो ये वाली चीजें जरूरी हैं कि कैरियर काउंसलर होने के लिए भी ना कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और फिर उस बेसिस पे उसको इंडल्ज भी करना चाहिए एजुकेशन के अंदर, ना कि रैंडमली बस कुछ भी है तो उसको आप कैरियर काउंसलर भी बना दें और उसको आप एजुकेशन में भी इंडल्ज कर दें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच शुड बी डन। आपको क्या लगता है कौन सा बंदा जो है वो कैरियर काउंसलर बन सकता है या कौन डिजर्व करता है कैरियर काउंसलर? नहीं, बंदा बन सकता है या जिसको एक हम पॉइंट कर सकते हैं कैरियर काउंसलर ये ठीक है, या कौन सी एक बंदे के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि कैरियर काउंसलर ठीक बंदा है? क्योंकि यू I सेड think कि they should not be biased. What I have experienced in my life, or even I encounter teachers and whenever they are actually giving advice to the students. So for example, let me explain it to you with an example. कि अगर मुझे एक काम आता है ना, let's take an example of CS maybe. So अगर मुझे Android development आती है ना, तो I would be like क्योंकि मुझे सिर्फ यही आती है, तो I would be saying आप भी यही करें, आप भी यही करें, you know, everyone should do that. अब क्या हो गया, ये तो बायसनेस होगी ना। मे बी यू आर मोर गुड इन मशीन लर्निंग और मे बी यू आर मोर गुड इन बिजनेस एंड मे बी यू वांट टू डू समथिंग एल्स। अब बायसनेस जो है ना, वो सबसे पहली आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि बंदा अच्छा कैरियर काउंसलर नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बाइस्ड है। उसको डॉक्टर पसंद है तो वो कह रहा है सब डॉक्टर बने। तो सबसे पहले इस बंदे को बाइस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, आपको ये देखना चाहिए कि दैट पर्सन हैज सम मार्केट रिसर्च, सम यू नो बैकग्राउंड नॉलेज। मतलब अब एक तरफ का, एक साइड का, या एक बंदा जिसने किसी एक तरह की जिंदगी गुजारी है और उसका एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनली नेशनली, तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि दैट गोइंग टू बी अ गुड कैरियर काउंसलर। अगर मैंने कभी इंटरनेशनली एक्सपोजर नहीं किया, आई हैव नेवर मेट पीपल हु आर इंटरनेशनल, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इंटरनेशनल मार्केट इंडस्ट्री, हाउ कैन आई टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन। तो अगर मेरा अपना जाती एक्सपोजर नहीं है तो मैं आपको ठीक बात नहीं बता सकती। तो फॉर अ कैरियर काउंसलर आई थिंक द पर्सन शुड बी not biased, should be unbiased, should be very honest, and should have a lots of research, background data and knowledge. Only then you can qualify for being a career counselor. तभी मैं ये नहीं समझती कि वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा, तभी मैं ये समझती हूँ कि it will hit a certain lot and there should be group of people as a career counselors. ये जो आपने यहाँ पे आई थिंक जो आपने बायसनेस वाली बात की है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो कैरियर काउंसलिंग है हमारे एरिया में, वो बायसनेस की वजह से क्या, एंड्रॉइड डेवलपर हूँ तो आप भी एंड्रॉइड डेवलपर। एग्जैक्टली, एंड बायसनेस इज सो मच कि आप देखें, इफ यू लुक एट सम मोटिवेशनल स्पीकर्स और कैरियर काउंसलर्स एंड दे वुड बी लाइक के, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने नौकरी नहीं की तो कोई भी नहीं करे। नहीं, अगर किसी को पसंद है तो आप उसे करने दें। इट्स नॉट द केस। अच्छा, अगर मैं नौकरी कर रही हूँ तो कोई बिजनेस ना करे, नहीं, अगर किसी को पसंद है तो करने दें। लेट देम डू whatever is best for them. So like don't impose things on them just because you think what you did was great, तो अभी आपको लग रहा है कि वही होना चाहिए। तो ये चीज this plays a very huge role। और फिर मीडिया इतना अफेक्ट करता है कि students do get affected by these type of talks, और उनको लगता है कि बस एक सुनो तो उसके पीछे लग जाएं, दूसरी सुने तो उसके पीछे लग जाएं, and now they are shattered कि करना क्या चाहिए, who is saying the correct thing। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, कहते हैं a lot of information is causing misinformation।
It's just like वो आपकी stack up हो रही है and you don't know, you know, how to figure out what information you need exactly. So these are all the factors which play in the part. Okay, no, coming forward, students graduate हो गए, fresh graduate when they come to a market or industry, उनको कुछ खास आइडिया नहीं होता कि what things are about and मैंने करना क्या है, या ये एक environment के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं होता. इसके बारे में आप इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, तो ये ये जब हमारे पास जो भी रिक्रूटर्स आते हैं वो हमेशा इस बारे में कंप्लेन करते हैं दैट यू नो योर स्टूडेंट्स आर नॉट गुड एट इंटरव्यूज, they have not done any research about the position they are applying, or maybe they don't know about our company. For this I would say कि ये एक बड़ी inherited problem है which lies on the core of this entire thing कि maybe as a whole nation I would say people are not willing to learn. You understand the point? They're not willing to learn anything. So let's say if I'm a teacher and I will always tell them कि आपकी communication skills अच्छे होने चाहिए. One day you would be, you know, sitting in front of some people and they are going to ask you a bunch of questions and you should be confident enough. They're not willing to do that. They be like, let's get the grades. Yes, that's good. Okay, so let's get 3.9 GPA that's and enough. we are done. So अब जब आपकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है तो अगर आपको कुछ टीचर्स कह भी रहे हैं कि आप ये वाला स्किल सीख लें या आप एटलीस्ट जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें, हाउ यू शुड बी प्रेजेंटेबल, लाइक ऑलवेज फोकस ऑन यू नो लाइक प्रेजेंटेशन एंड दे आर एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कम अप विद यू नो एक्सक्यूजेज लाइक के हमें काम आना चाहिए. आपको काम आना चाहिए लेकिन आपको बोलना भी आना चाहिए ना. आई थिंक नॉलेज इज नथिंग इफ यू कैन नॉट कम्युनिकेट इट. व्हाट इज नॉलेज इफ आई कैन नॉट कम्युनिकेट इट टू यू? सो नॉलेज इज गोइंग टू लूज इट्स वैल्यू. तो कम्युनिकेशन नहीं है स्टूडेंट्स की इम्प्रूव्ड, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव नहीं है और वो उस पर काम भी नहीं कर रहे हैं. तो आई एग्री कि टीचर्स काम नहीं करवा रहे, ठीक है, दैट्स वन पार्ट कि मे बी ड्यूरिंग एजुकेशन टीचर्स आर नॉट हेल्पिंग देम टू डू सो, बट दे आर ऑल्सो नॉट विलिंग टू डू सो. सो दिस इज अ टू वे थिंग. अब अगर मुझे पाइथन पढ़ानी है तो मैं सारा टाइम इंग्लिश के लेक्चर तो नहीं दे सकती ना, बट दे शुड नो दैट समथिंग इज कमिंग अप. सो आई थिंक दिस इज अ इनहेरिटेड लर्निंग कैपेबिलिटी जो स्टूडेंट्स में विद एवरी डे इज डिक्लाइनिंग. नॉट इन ऑल स्टूडेंट्स बट मे बी I would say 50%, 60% students are like very much hopeless. Like they are in graduation and they are thinking we're not going to get job. आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन का इस चीज़ का जिक्र किया, तो व्हाट डू यू थिंक द सोसाइटीज इनसाइड द यूनिवर्सिटी, लाइक ड्रामेटिक सोसाइटी and other societies, there are a lot of societies in different universities, what role they play inside the university? Do you encourage students to join them, or do you think they put students aside from their grades or students? No, I don't think so. So well, I could be biased in this thing as well. I was like the person who was always on stage all of my throughout my education. Has it affected my knowledge? Not at all. So मुझे पता था कि मुझे अपना काम कब करना है और मुझे ये पता था कि मुझे स्टेज पे कितना टाइम रहना है. So that is not one of the thing कि नहीं. I think it boosts your confidence. I think wherever I am today is so my confidence has played maybe 80% of the thing, you know, the part. If I was not confident enough तो मैं कहीं पे भी ना होती, मैं ना मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर होता ना मेरा नेशनल कहीं पे भी एक्सपोजर होता. तो आई पर्सनली थिंक दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट एंड बाय यू नो डूइंग सच एक्टिविटीज, यू नो अप्लाइंग इनटू दीज थिंग्स. आप अपने स्टडीज को इग्नोर ना करें लेकिन उसके साथ आप बैलेंस करें. देखिए आप हमेशा याद रखें कि अगर कोई स्टूडेंट 4 GPA ले रहा है ना तो इसका मतलब कि उसकी तो कोई सोशल लाइफ ही नहीं है. सो ही डजंट नो हाउ टू बिहेव विद पीपल, how to work in group, because when you will work in group you will lose some time and you will lose some grades and it's fine because ultimately you're going to work with people. तो मैं encourage करती हूँ स्टूडेंट्स को कि उनको ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट लेना चाहिए. हाँ, मैं उन स्टूडेंट्स को encourage नहीं करती जो सिर्फ इन्हीं एक्टिविटीज में and then they are you know leaving behind the studies. लेकिन a good balance is very important because ultimately I think you are going to live in society. You have to cope up with the society. You have to learn the skills to live in the society. And ये जो आपके एक्टिविटीज होती है ना ये आपको बर्दाश्त भी करना सिखाती हैं, आपको बात करना सिखाती हैं. आपको पता चलता है कल को आप कहीं और जाएंगे तो आप कैसे बात करेंगे, लोगों के साथ कैसे कॉप अप करेंगे. तो मैं बहुत इनकरेज करती हूँ इन चीज़ों को. और बल्कि मैं तो वन ऑफ द टीचर हूँ जो कह रही होती हूँ कि अभी ये इवेंट आया तो आपने इसमें आना है, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटीज. तो मुझे सबसे ज़्यादा होता है कि आप लोग क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वाई यू डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस. इसके अलावा एक और चीज़ जो यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दैट इज प्रेजेंटेशंस. So I really encourage students to do presentations.
I give them an open choice here, like you can pick anything, but you have to give a good presentation. And I really like spend a lot of time where they do presentation, and I actually mark them on the basis of कि वो तेज बोलते हैं या आहिस्ता बोलते हैं. I mark them how they dress up on the day of presentation. I mark them कि उनका eye contact कितना था. So these practices, if done more often, it can increase the confidence of students. चल ये अब चले ग्रेजुएशंस की भी उन्होंने बता दी. आपने इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी के दरमियान एक ब्रिज का काम किया है. इंडस्ट्री लाइक मोस्टली Rev9 सॉल्यूशंस एज वेल एंड पंजाब यूनिवर्सिटी जिलम कैंपस एज वेल. सो हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक इट इज़ के इंडस्ट्री एक एक्सपोजर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ड्यूरिंग देयर एकेडमिक ईयर, ड्यूरिंग देयर यूनिवर्सिटी लाइफ, हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट? Oh, obviously, it's like the most vital thing, I would say. Some people do state that maybe, you know, if you are doing a degree like maybe computer science, then you need a industrial exposure. I think if you're doing anything, you need industry exposure. You need practical exposure. You're doing sciences, you're doing psychology, you're doing, you know, even if you're doing literature, if you're doing computer science, everything, you're doing this because one day you're going to work, which means there exists an industry for that. And you need to have exposure of that industry. अब देखें, university is still, आपके जो teachers हैं ना, they're still your teachers. So they are not practically, you know, doing the things. वो आपको बहुत अच्छा सिखाएंगे, लेकिन आपने उसको implement कहाँ पे करना है, वो आपको एक industry का बंदा सिखाएगा. So if you don't have a practical exposure, तो जब आप industry में जाते हैं, so you just actually meet an entire different thing. तो आपको लगता है कि ओह ये क्या हो गया, या आपको लगता है कि ओह ये तो हमारा बड़ा कोई एक्सट्रीमली गैप था, हमें यूनिवर्सिटी में कुछ गलत पढ़ाया गया. इट्स नॉट लाइक कि गलत पढ़ाया गया. आप ट्रस्ट करें कि अभी हमारा जो करिकुलम पाकिस्तान में हम लोग अगर CS लेवल पे पढ़ा रहे हैं, द सेम करिकुलम इज बीइंग टॉट इन USA, इन कनाडा, एवरीवेयर. वो सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं. तो प्रॉब्लम ये है कि वो दरमियान में प्लेसमेंट्स कर रहे हैं, वो दरमियान में इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स वो नहीं करें. वो एक ईयर पढ़ेंगे और एक ईयर प्लेसमेंट का करेंगे. तो दे गेट अ प्लेसमेंट ईयर जिसमें वो एक साल इंडस्ट्री में काम करके आएंगे, फिर बाकी अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे. दैट प्रैक्टिस इज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान. आई थिंक पाकिस्तान में तो प्लेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. डिग्री के दरमियान, लाइक इफ यू हैव अ 4-year डिग्री, so you should get 2-year degree, 1-year placement, and then 2-year degree. But we're not doing that, right? Even if students are supposed to do internship, what they're doing is के internship letter बनवा लें. Exactly. Right? So like they I would say like they would be like कि किसी ना किसी तरह हम जुगाड़ लगा लेते हैं किसी चीज का. That is also like, you know, causing a lots of issues कि आपका वो gap bridge नहीं हो रहा. यूनिवर्सिटीज को भी चाहिए कि गैप ब्रिज करें, और इंडस्ट्रीज को भी चाहिए कि करें. अब अक्सर होता है कि इंडस्ट्रीज आके ऐसे दे एक्सपेक्ट के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कुछ आता हो. नहीं, अभी उनको आता होगा तो फिर हम आपको तो नहीं कहेंगे ना कि आप लोग आके उनको गाइड करें या उनको काउंसिल करें. तो ये एक 2-way चीज़ है कि यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, और इंडस्ट्रीज़ को भी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को एज अ स्टूडेंट ही लें, अंडरस्टैंड करें कि उन्हें नहीं आता. दे आर गोइंग टू बी रियली नूब एंड दे डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स. तो इस तरह हम इस गैप को ब्रिज भी कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट तो ये बहुत ज़्यादा है. इसी वजह से तो हमारी जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा था अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी एक वजह ये भी है कि पर्सन इज डूइंग अ गुड डिग्री, द रेलिवेंट डिग्री, बट यू डोंट नो वेयर ही इज गोइंग टू बी प्लेस्ड इन द इंडस्ट्री. तो वो जो गैप है ना, वो इस वाला जो हम एक प्रोसेस करते हैं ना, उससे आ सकते हैं. अब उसकी अच्छी कैरियर काउंसलिंग है, उसने डिग्री भी अच्छी कर ली, लेकिन उसको पता ही नहीं कि इंडस्ट्री में मैं कहाँ फिट होता हूँ. तो वहाँ पे जब इंडस्ट्री आपके साथ इनरोल होती है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ एंगेज होती है, हम सॉरी, तो फिर ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होती हैं. जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, ये जॉब रेडी एक स्टूडेंट के लिए, डू यू थिंक इज इट ओके, और कितना कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इसको? देखें, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हर जगह है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. पाकिस्तान में भी, इवन इफ यू से everywhere in the world, I would say, because I have exposure to almost every big country you can name, और उनके करिकुलम के साथ मेरा एक्सपोजर है. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो हम पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं वो बाहर नहीं पढ़ाया जा रहा. द सेम थिंग्स वी आर स्टडीइंग. पढ़ाया जा कैसे रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम. सो अगर मैं कहूँ ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, तो क्या ये प्रॉब्लम है कि हम क्या कंटेंट पढ़ा रहे हैं? नहीं, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हम कंटेंट कैसे पढ़ा रहे हैं. अब आप सेम चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं, और आपके टीचर्स कितने कैपेबल हैं. आई थिंक इट टीचर्स की कैपेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ प्लेइंग द पार्ट कि हम लोग उसको वट एवर यू से इंडस्ट्री रेडी नहीं कर रहे हैं, या आपके एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स हैं. वो सारे के सारे इसलिए हैं कि ठीक है, हमने बता दिया कि जी आप ये वाली किताबें पढ़ लें,
ऑक्सफोर्ड का सिलेबस चल रहा होता है काफी स्कूल में, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं पाकिस्तान। आपको हैरानी होगी कि मैं जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपने ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े इंटरमीडिएट में या मे बी इन योर हाई स्कूल। दे बी लाइक नो। मैं कहती हूँ ये तो हमने 5 में पढ़े थे, लिटरली द 5 में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स हमारे उनके यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आए ना तो स्टूडेंट्स आर लाइक कि ये हमने नहीं पढ़ा हुआ। यू वोंट बिलीव कि मैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को सेट्स पढ़ाती हूँ, आपने भी सेट्स 5-6 में पढ़े होंगे, ठीक है। समटाइम आई थिंक कि हमने तो इतना कुछ पढ़ा था, इन्होंने नहीं पढ़ा, but then why they are having a good degree but we are not having a good degree. Like sciences in UK, sometimes in certain schools sciences don't start until year 6, but over students are studying science at the very start age. ये भी एक प्रॉब्लम है, हमने ज्यादा बम्बार्डमेंट करनी शुरू कर दी है कि भाई अभी बच्चा प्ले ग्रुप 1-2 में पहुंचा है, साइंस भी पढ़ाओ, कंप्यूटर भी पढ़ाओ, पता नहीं क्या क्या पढ़ाओ। और फिर क्या है कि जो वो बेचारा 1-2 में साइंस पढ़ रहा है ना, वो मैट्रिक तक वो लेके चल रहा है ना, कंप्यूटर की रैम रोम को उसको 1 में पढ़ा रहे हैं और एंड तक आप लेके जा रहे हैं। तो आप उसे पढ़ाई थोड़ा सा लेट लें या पढ़ाने का तरीका बेहतर करें, आप उसको एक दफा चीजें दिखाएं, आप उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। तो आई थिंक कंटेंट का इशू नहीं है, डिलीवरी का इशू है। आई थिंक कंटेंट ओवरलोड हो चुका है अब हमारे मुल्क में जो हम पढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं ना पाकिस्तान में अच्छी किताबें नहीं पढ़ाई जाती, मे बी समवेयर बट नॉट नाउ। इफ यू एक्चुअली लुक इनटू इट, दे आर गुड, अप टू मार्क, बट टीचर्स आर नॉट अप टू मार्क। आई वुड नॉट से कि अब मैं टीचर्स के खिलाफ ये बात कर रही हूँ, बट उन्होंने पुराना पढ़ा या हमने टेक्निक्स चेंज नहीं की, तो वो या उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। अनदर थिंग, यस, वी लैक अ लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज and a lots of facilities on the behalf of teachers, on the behalf of schooling system, on the behalf of college system and on university system. तो अगर मैं कुछ करना भी चाहती हूँ but university is not providing me the budget or school is not providing me the budget, how can I do that?